playtest 5. My name is Crips, with me is Mamba. और हमने आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स देखे हैं ऑफ इंडस India's newest battle royale, which I think is about to take the market by storm when it releases. अगर आप ये देख रहे हो, you guys have an exclusive sneak peek, a preview of what this game is gonna look like. And let me tell you, I think you must have figured it out by now. It looks amazing. The mechanics smooth, shooting so fluid, and given the way that some of the teams are playing over here, I think we might just even have a meta on our hands. I definitely feel कि LMG meta है यहाँ पे जिस तरीके से teams इस्तेमाल कर रही है. For now, Trident I feel, Trident especially I feel is so overwhelming mid to close range जो fights होते हैं खासतौर पे आखिरी zone में, क्योंकि ramp up होती है आपकी speed भी, and if you know exactly where the opposition is, अगर smoke के अंदर भी आप blind fire कर रहे हो बहुत ज़्यादा effective है. Yeah. And in the end, smoke bites actually बहुत ज़्यादा हो रही है, right? Because कोई ना कोई एक टीम रहेगी जो cosmium के लिए जाएगी, and उनको spam करने के लिए you just spray them with the Trident. You make it look like a Tommy gun when you do this. Say hello to my little friend. It's actually quite a big gun, so I can't say little friend. I mean, compared to let's say something like an Ulka, yeah, it's very small. Ulka कहाँ पे है? I don't think we've seen too much Ulka action. No, we've not seen any Ulka action as much. Perhaps, I mean, my memory is a little hazy right now. Same. I mean, so, I mean, because we've already seen 3 matches today, we kind of might. Not just that, it's been very exciting also. Yeah. उसके बारे में बात करें तो standings की तरफ नजर कर लेते हैं और देखते हैं कि standings हमें क्या बताती है. Because reckoning जिस तरीके से खेलते जा रही है, match 3 का जो result है 30 points, 17 kills. What? 17? I'll tell you what. You need to remember this. They got 17 kills plus 4 of their own players, so that's 21. You have to remove 21 players out of the server. They've finished more than 50% of the server. Exactly. They finished half the server. Bro, what is this? This is like a Thanos snap, bro. उनने आधा population server का खुद ही wipe out कर दिया है. बाप रे. It's borderline scary how good their performance was in this game, and with a 30 bomb in a single game, I think nobody can catch up to them at this point. For sure, but मैं worthy mention जरूर दूंगा 8-bit को and Godel को भी. But एक storyline जो मैं cover करना चाहता था इसके साथ Evil की story थी Godlike से, yeah. हमें अभी पता चला कि उनकी खेलने की जो journey थी उसकी शुरुआत किस तरीके से हुई थी. तो उनके भाई थे जो पहले गेम खेलते थे, and जब भी उनको उनकी मम्मी बुलाती थी वो बोलते थे कि ये लीजिए डिवाइस, मरना मत, जिंदा रहो, मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ. उस तरीके से उन्होंने खेलना चालू किया था और अभी देखें कहाँ पे बैठी है. Yeah, so she started as a substitute for her brother, and now she's carrying her entire team. So that's a big difference in lifestyle and playstyle as well. Yeah, but चले MVP की तरफ नजर करते हुए देखते हैं हमारे MVP कौन थे. Batman in this game, I think. No, it was actually Yuva. 8 kills. Yeah, so that was dangerous, na? 8 kills by himself. So he's actually overtaken Evil as the highest kill in a single game. But I think Evil still might be on the very top of the overall MVP leaderboard. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. बट यहाँ पे 8 किल है. फाइनल लीडरबोर्ड तो हमें बाद में पता चलेगा. लास्ट जो हमने कल देखा था MVP को भी काफी अच्छा खासा इनाम मिला था वहाँ पे. आज क्या होता है वो तो आज शाम को ही पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल स्टैंडिंग्स की तरफ नजर करेंगे और देखेंगे ओवरऑल स्टैंडिंग्स क्या कहते हैं. एज फार एज आई रिमेंबर 2 पॉइंट का अंतर था, नहीं 4 पॉइंट का अंतर है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रेकनिंग एंड 8-bit के बीच में 4 पॉइंट का डिफरेंस है. ये जो 4 पॉइंट्स है, देखने में आपको लग रहा था कि रेकनिंग का परफॉर्मेंस कितना डोमिनेटिंग रहा है. 30 पॉइंट्स उन्होंने एक मैच में निकाले हैं. एग्जैक्टली राइट. आई मीन 30 पॉइंट्स अगर एक मैच में निकाले हैं तो सोचो कितना बड़ा जंप उन्होंने किया है यहाँ पे. गॉडलाइक जो थे and 8-bit, उन दोनों के बीच का कंपटीशन चल रहा था for the top spot, and now they've overtaken them both in one fell swoop. Oh yeah, oh yes. But मुझे लगता है अब दिक्कत सबसे बड़ी किसके लिए है? Godlike के लिए, because वो नजदीक है लेकिन इतने भी नजदीक नहीं है. उनको रेकनिंग और 8-bit को अर्ली टारगेट करना पड़ेगा अगर वो फर्स्ट पोजीशन लेना चाहते हैं तो. But रेकनिंग was definitely a curveball. Oh, definitely a curveball. मुझे yesterday के games याद है. Actually, yesterday जब practice matches हो रहे थे तो reckoning इतना अच्छा नहीं खेल रही थी, लेकिन उनके players उनने थोड़ा extra time बिताया practicing the gunplay. वो जल्दी उठ के यहाँ पे आके devices पे practice कर रहे थे. And I think with this they've boosted their firepower exponentially, which is quite odd
to see कि orangutan 8th position पे है. Yesterday reckoning और orangutan की positions literally interchange हो गए थे. Orangutan was playing really well. वो लोग भी top 3 में थे और कल reckoning इतना नहीं खेल रही थी. लेकिन आज एकदम opposite हो चुका है. reckoning ऊपर आ चुकी है and orangutan sitting on 8th position. जी हाँ, 8th position पे तो बैठे जरूर है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि ओरांगुटान को थोड़ा और फ्रीडम के साथ खेलना पड़ेगा, बिकॉज़ जिस तरीके से अभी वो खेल रहे हैं दैट्स अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक. उदास थोड़े लग रहे थे, मायूस है वो बाहर. एंड हेडी से मैं चर्चा कर रहा था, वो he was visibly upset. उन्होंने कहा कल काफी अच्छा खेला. ऐसा मैटर yesterday he was the MVP. एंड आज उनकी मैचेस अच्छी नहीं जा रही, तो मुझे लगता है कि शायद आखिरी 2 मैचेस में कुछ अलग कर I hope so. Because Chonti was also there. काफी ज्यादा हौसला अफजाई कर रहे थे उनकी, एंड मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ सीजन प्लेयर है यार. Yeah, I mean he's very experienced that way, and kal he was the MVP. Like he won an iPhone 15 because he was the MVP yesterday. Stop saying it. तो मैं चलाने के लिए बोल रहा हूँ मैं ये. फिर क्रिप्स ठीक है यार, कोई बात नहीं. मैं कल आता हूँ फिर. कल Hades आए थे. आज I hope he turns up in the last 2 games because so far जो competition है it's between 3 teams now. It's Reckoning, 8-bit and Godlike. उन दोनों के बीच में contest है. In fact, I wouldn't even say Godlike as much because they're still a little far behind. Like उनको वो 50 point mark cross करना पड़ेगा in order to actually come close to Godlike in 8-bit. But yeah, if someone else joins the party now, if they start gunning for the top spot, it will get even more intense. It will get even more intense, no doubt about that. लेकिन उसका इंतजार मुझे तो है, because आपको पता मुझे किस तरीके के मैचेस अच्छे लगते हैं. Matches with a lot of action, especially drop clashes, because initially किसी के पास इतनी ज्यादा loot होती नहीं है, और वहीं पे मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है. Players मार रहे होते हैं, किसी के हाथ में रफ्तार हो, किसी के हाथ में कटार हो, किसी के हाथ में कुछ ना हो. क्या करेंगे आप? नहीं, बाइक निकल के भागो. That's kind of what Global eSports had to do in one of those matches yesterday. Every match. I mean वो तो उनका style ही वैसा है. I mean these players from Global eSports they're more of PC players rather than mobile players. तो उनको naturally इतना वो चल नहीं रहा है. PC client क्या आएगा? There'll be the PC version of this. And उधर I think Megan, if he watches the word, वो बोलेगा मामा भाई कोई बात नहीं, आपने सुन लिया, आपको जो बोला था CP5 में PC पे आओ कभी दिखाते. Yeah. CP6 next playtest hopefully. We don't know. Not me guys. Just speculating. Yeah, we're just speculating at this point. लेकिन I love how the game has improved since CP4. In fact, one of the teams जो community playtest 4 में आई थी, Team Infinite, वो आज इतना अच्छा नहीं perform कर पा रही है, and they also said कि the game has changed drastically. It's improved so much. So if you guys are watching this, you can get a glimpse of what it will be like when it's in the finished state, but it will be much smoother. And I mean even we had fun, although हम लोग इतना अच्छा खेल नहीं पाए performance wise, but I was enjoying myself when I was playing the game. It felt really smooth. So I'm enjoying myself now watching it, because yeah वो भी. I feel like the way it's all been designed, जिस तरीके से पूरी की पूरी गेम इकट्ठा हो रही है, end में जिस तरीके से all the players are approaching it, I think it's very entertaining. And even this is about to be entertaining. We are about to start game number 4, ladies and gentlemen. We'll be hopping into Veerlok once again, where the Mythwalkers will contest for the Cosmium and potentially for the heads of all their enemies. Oh yes. And Grips, I'm sure you're very happy, because आपको अब clearly सब नजर आ रहा है कि कौन सी टीम क्या करना चाहेगी. Yeah, I mean मेरी आंखें इतनी कमजोर नहीं थी, but yeah, now that I mean, for those of you who don't know, our casting setup has changed a little bit more, and for the better. And Super Gaming are taking care of us really, really well. I mean, मैं 6 साल से esports इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, लेकिन जिस स्पीड से Super Gaming हमारा फीडबैक सुन के इम्प्रूवमेंट करती है, I have never seen anyone else do that. Well, feedback incorporate तो जरूर करेंगे, but at the same time, देखिए जो वीरलोक दर्शन चल रहे हैं यहाँ पे, वो काफी बेहतरीन है. और Observer is kind of like taking us on a full tour. Oh yes. यार वैसे तो घूम नहीं पाते, हमारे वर्किंग शेड्यूल की वजह से इधर ही घूम लेते. क्या बोलते हो? Because जब भी छुट्टियां होती तभी सबसे ज्यादा इवेंट्स होते हैं. Exactly. That's kind of like the curse of our life, you know. Yeah. But it's also a fun job. Let's be honest. हमारा जो काम है काफी fun है, because at the same time, imagine this: you're talking about a video game जहाँ पे आपके दोस्त ही खेल रहे हैं, and all in all, you're just having a jolly old time. You're having a great time.
So yeah, this is, I mean, some people would even call it the dream job. Although I definitely dreamed about it for sure. Yeah, I used to dream about it, and now it's reality. I used to dream about this game at one point. Like when I first heard about it, I was so excited कि yes, एक Indian-made game finally हमें देखने मिलेगा. I do know that आपको बहुत ज़्यादा पसंद है इस टाइप की games. ये genre जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद है. Yeah, exactly. And now to see that an Indian game is here and it's doing really well, absolutely nuts. Without further ado, शुरू करते हैं चौथा game of the day, and this time हम जाएंगे वीरलो टर्मिनल से टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट साइड नियर गुफा. ग्लोबल eSports इतना ज्यादा स्प्लिट कौन कर रही है? मियोकिन कहीं और जा रहे हैं, जेडी कहीं और जा रहे हैं, वत्सल कहीं और जा रहे हैं, और सुकी एकदम एंड में जाके ड्रॉप किए. आई थिंक ही वाजंट एबल टू प्रेस द ड्रॉप बटन समहाउ, तो इसलिए वो यहाँ पे है. मीनवाइल थोड़े बहुत और पोजीशंस चेंज हुए हैं. 8-bit अभी रावत फाउंड्री पे जा चुकी है. मीनवाइल टीम मिथ वो वीरलो टर्मिनल के भी नीचे एस्टेट में है. Godlike on the other hand, as always, are in Gufa. I think this is one of the most fascinating places in the entire map, you know, क्योंकि यहाँ पे 4 entrances है गुफा के. You can enter from either of those 4 gates, या फिर अगर आप drop करते हो directly तो आप center में भी जा सकते हो. And look at this, Global eSports के 2 members, सुकी and जेडी, Godlike की तरफ जा रहे हैं. They are gonna challenge the beasts, and Blink ने जेडी को spot कर लिया है. उनके ऊपर डैमेज आना शुरू. Now it's JD's time to run, but there's no escape path from there. उनको और भी अंदर जाना पड़ेगा to escape from this area, but Rebel will chase him down. He just about got away, लेकिन Rebel को इस गेम का पहला नॉक एंड फिनिश भी मिल जाएगा. क्या शानदार शुरुआत करी इन्होंने यहाँ पे. Godlike जो लास्ट मैच में हमको रेकनिंग ने दिखाया था, वो इस बार Godlike करना चाहती है, एंड जिस अंदाज से शुरुआत करी है मुझे लगता है they want to stamp their authority, and rightly so. उनको जरूरत है इस चीज की. Evil ने सुकी को अब डाउन कर दिया है. Global eSports in a bit of a shamble, aren't they? Yeah, they are in a bit of a shamble. It is a little weird क्योंकि वो बहुत अलग-अलग लोकेशंस पे ड्रॉप कर रहे थे. Usually वो लोग विजिलेंस या फिर वे स्टेशन के आसपास जाते हैं, लेकिन इस बार सब लोग स्प्लिट हो गए थे. So yeah, I do feel a little bad for Global eSports. I mean, of course you do. Of course you do, Crips. I mean, it's not like they can fight back really well. तो like placement points ही उनका एक सहारा था. डूबते को टिनकी का सहारा मिल रहा था, लेकिन अब वो भी डूब चुका है. Hey, but at least Godlike get to stat pad themselves. They are now 2 points up. 2 kills मिल चुके हैं उन्हें. And इसी के साथ Godlike will come even closer to teams like 8-bit and Reckoning eSports. Stat pad बोल दिया. Sorry यार, बुरा मत मानो guys. Pardon my words. I know I'm a caster. I'm supposed to be more vigilant about my words. I'm messing with you, Crips. Speaking of vigilance, that is surprisingly empty in this game. The area vigilance, bro. Yeah, of course. No, it took me a while because मैं मैप देख रहा था. मैं देख रहा था प्लेयर्स किस तरीके से रोटेट कर. फिलहाल के लिए काफी स्प्रेड आउट है, इवनली स्प्रेड आउट है मैप के अंदर. Yeah. अब बात करें 8-bit के बारे में, तो वो फाउंड्री की तरफ है. Then obviously we have OG, which is around Knowledge Park. तो आराम से सारी की सारी टीमें भी लूट करेंगे. ये ट्रेंड देखा था हमने सेकंड मैच में, काफी आराम से खेली थी, लेकिन थर्ड मैच में तो माशाल्लाह क्या खेली है रेकनिंग. फोर्थ मैच में Godlike ने उस तरीके की शुरुआत करी है. मैं चाहता हूँ कि वही मोमेंटम के साथ वो कंटिन्यू करे, बिकॉज़ उनको जरूरत पड़ने वाली है. And to some extent, I would say कि 8-bit थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव खेल के towards the end of the matches, क्योंकि हमने 2 गेम्स में बैक टू बैक उन्हें कॉस्मियम के लिए पहले जाते हुए देखा. एक बार उन्हें कॉस्मियम के लिए अर्ली ग्रैब करने की कोशिश की. They were stopped by Godlike. The next time they were stopped by Reckoning. So it kind of backfired on them both the times they tried to make an early move for the cosmium. Well, for now we have Myth Branchal. Myth currently at the bottom of the scoreboard, तो उनको थोड़ा संभाल के खेलना पड़ेगा. If they take the Global eSports approach of just surviving, I think they can boost up their numbers a little bit more. But so far, the deficit between them and the top 2 teams is quite a lot. Meanwhile, EG versus Godlike हमें देखने मिलेगा अभी बहुत ही जल्द. And this fight is happening very, very close to Gufa. Just outside of it, actually. काफी ज्यादा क्लोज फाइट हो रही है, लेकिन अब ये बहुत भयंकर होने वाला, बिकॉज़ Godlike versus EG and even one in the world. Yep, she's been getting knocks all around the clock, and now she just finished them all off within a matter of seconds. EG is out of this game.
उसमें से 3 kills तो evil को ही मिले हैं. Wasn't that a Raftar also at the same time? Was it? I mean, I didn't really care about the weapon No, as but much it's as the important. skill. I feel like Evil has found something. यहाँ पे मैंने देखा उन्होंने रफ्तार का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया है, and जिस तरीके से वो खेलते जा रही है, शानदार है वो. I mean, I would love to see a replay of that. That was an insane triple kill, followed by even more. My God, like. So now they got 2 kills on Global Esports. They got an entire squad wipe on EG. That is 6 kills for this game already. और अब तक सिर्फ दूसरा निर्वाणा आया है. तो Godlike is climbing up the rankings really fast. 100%. लेकिन यार Godlike ने जिस तरीके की शुरुआत की, मुझे नहीं लगा था एक प्लेयर जाके 3 प्लेयर्स को ऐसे एलिमिनेट कर देगी, लेकिन here she is, Evil जिस तरीके से खेल रही है ना, मुझे अभी भी याद है, आई थिंक उसके पहले वो मैक बारिकर के साथ खेल रही थी. आई डोंट नो इस गेम में किसके साथ, मैंने नोटिस नहीं किया, बट वो जितना उनका क्यूट कैरेक्टर है, जितना क्यूट किरदार है, गेम प्ले ऐसा नहीं है. गेम प्ले बिल्कुल डिमोनिक. Meanwhile, NXT versus Infinite, I'm actually surprised nobody from Infinite has been shot yet. Thunder X पोजीशन लेके बैठे हैं, Hayden उनको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, and they're just waiting for the perfect moment to strike. Infinite जो है वो 2 अलग-अलग एरिया से आ रही है, 2 साइड से NXT को सराउंड करने की कोशिश करेगी. देखिए यहाँ पे, she was pushing, she's going to go in, oh my goodness, OG क्या इसके ऊपर रिएक्ट कर पाएंगे, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, she doesn't care, she goes in, guess what, needs to survive, क्या पीछे हट पाएंगी? जी हाँ, वापस आ जाएंगी. Godlike, what are you doing? Absolute bullies. Exactly, bro, and that was a Tempest, not even the Raftar, and Tempest is very hard to control that way. So absolute respect for Clutchy for being able to handle that really well. Meanwhile, Rebel वो भी जाएंगी, फ्लैंक करेंगी लेफ्ट हैंड साइड से, उन्हें एक और नॉक निकाला है. Inside that smoke, Hades, Pahadi, Mr. Jay, they are all fighting for their lives. Hades somehow manages to heal himself back to full HP, but the rest of his teammates can't really do much, and Rebel up close will shred him. 3 kills for Rebel as well. Bro, Godlike is on fire, bro. They already have 9 kills. And this is just the second Nirvana. They've eliminated 2 whole teams, and they've got 2 more kills onto the players of Global Esports. Shit, wait, do the math. That's actually 10 kills. Bro, 10 kills already? This is gonna be a bomb. ये सब मेरे से मत करो, मैच वैसे मत करो, लेकिन इतना पता मुझे Godlike is on an absolute roll. जिस तरीके से वो खेल रही है, जितनी तारीफ करे उतनी कम है उनकी. लेकिन NXT फिलहाल क्या करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है. घर के अंदर आराम कर रहे हैं फिलहाल. उनके आजू बाजू की टीम्स की अगर हम बात करें तो एक टीम है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की तरफ से, आई बिलीव दैट्स ओनली मियोकिनो सर्वाइविंग. सिट्रेप की मैं बात कर रहा हूँ, एंड अगर गॉडल की नजर उनके ऊपर चली गई तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है. Wasn't Fansal also alive? I can't see him anymore, so I'm assuming he might have died. But regardless, Global Esports in tough situations. Infinite in even tougher situations. उनने पहले हमला बोला था NXT पे, लेकिन अब they are on the receiving end of things, and they have already lost quite a lot of their players. NXT एक पॉइंट पे surround हो चुकी Infinite के players से, लेकिन they managed to hit them back hard and drive them away as well. Of course, to some extent, Infinite के players ये सोच रहे हैं कि हाँ शायद निर्वाणा से बच के ऑलरेडी जोन के अंदर चले जाए, but yeah, they already lost a couple of their players in the process, so that kind of backfired. और अब देखिए किस तरह से स्प्लिट हो चुके हैं. Infinite के U भी ऑलरेडी सेंटर ऑफ द निर्वाणा में पहुंच चुके हैं, जबकि उनके जो बाकी के 2 टीममेट्स हैं, wait, he's the only one. I think he might just be the only survivor from Team Infinite. He just might be, लेकिन आपका जो मैथ था वो सही था. 10 kills है उनके पास अभी. Yeah. So Krebs, good for you, man. काफी अच्छा गणित है आपका. But getting back to the game, reckoning की अगर बात करें तो अब 2 टीमें जो बहुत शानदार प्रदर्शन दिखाते आ रही है, वो दोनों भिड़ने वाले हैं. क्लची, क्लची के ऊपर सीधा वार करते हुए वहां पे, एंड so close. Can Clutchy survive this one? She gets one. Oh my goodness, Clutchy survives. How is this happening? लेकिन बियर्ड बाबा वो नहीं छोड़ने वाले थे, बिल्कुल बदला लेंगे. Meanwhile, Godlike is under assault on the other end as well. उनके 2 players यहाँ पे Reckoning के प्लेयर से साथ फाइट कर रहे थे. Meanwhile, 8-bit उनके ऊपर हमला करने वाली थी, और at the same time Reckoning and 8-bit की फाइट भी शुरू हो चुकी है. So this is the 4th party situation, Mamba. I don't think we've seen such active battles in this entire tournament so far. Reckoning eSports के players, Ace Black जो उनके टीम का लीडर है, वो काफी ज्यादा खतरे में है.
स्कॉट के ऊपर बैठ के जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जूसी विल स्प्रे हिम डाउन. दैट डेवास्टेटर इज एब्सोल्युटली नट्स एंड लॉन्ग रेंज में इवन फॉक्स ओपी सर्वाइविंग ऑन हिज लास्ट लेग्स. ही विल गो डाउन. माइटी विल श्रेड हिम एज वेल एंड 8-bit यहां पे रेकनिंग का पूरा मोमेंटम छीनते हुए. ऑफ कोर्स रेकनिंग आए, गॉडल का मोमेंटम छीना, 8-bit ने रेकनिंग का मोमेंटम छीना एंड एक के बाद एक पासिंग पार्सल चल रहा है यहां पे. लेकिन जितनी भी टीमें हमने कवर करी अभी, आप बात करें गॉड लाइक के बारे में, आप बात करें रेकनिंग के बारे में, या फिर आप बात करें 8-bit के बारे में, ऑल फेवरेट्स. हर एक टीम जब उनको परफॉर्म करने की जरूरत होती है वो करते हैं, लेकिन 8-bit की खाली एक गलती हुई अभी तक थोड़ा ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं. Yeah, especially with Cosmium. लेकिन अभी तो उनने दो बड़े heavy hitters को इस गेम से बाहर कर दिया है. Reckoning have lost most of their players. Godlike, they are also limping. And this might just be the game जहाँ पे 8-bit dominate करके सबको overtake कर ले एक बार फिर से. And this is a good opportunity for every other team as well, because now they also get to make their mark on the server now that the two top teams are out. और मैं ट्राइडेंट के इम्पैक्ट की बात कर रहा था, आपको नजर आ रहा है किस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहा है. इतना ज्यादा डैमेज डिश आउट करता है वो वेपन. LMG मेटा तो है क्रिप्स. Yeah, so far at least in the hands of 8-bit these LMGs are deadly. I think हमने बीच में माइटी या फिर डेविस, I don't remember who it was, वो बीच में लोकस भी यूज कर रहे थे बहुत अच्छे से. So yeah, I think between that and LMGs are a little more preferred by these players so far. That's the meta of the day. Will it stay meta by the time the game actually comes out? We don't know yet. I don't think so. चेंज तो होगा, पक्का होगा जरूर. एंड गेम आने के बाद भी मेटा चेंज होता है, ऐसे नहीं कि नहीं होता है. सो एक प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन हमेशा चलते रहती है. आप ये देखिए कितने ज्यादा स्प्रेड आउट है. जोन के सेंटर में एक टीम नहीं है. Exactly, सब लोग ऐसे प्रेफर करना खेल रहे हैं, खेलना प्रेफर कर रहे हैं. जोन कहाँ पे जाएगा आपको क्या लगता है? I think एकदम बीचों बीच में आएगा, because चारों तरफ तो cliffs है और बीचों बीच ही एक एरिया है. So any team that manages to get high ground now will be amazing. Myokin is on one of these cliffs, और actually global eSports split होके खेल रही है. Myokin is on one side of the map, Watsal is on the other side of the map. तो वो split करके अपने survival के chances ज़्यादा बढ़ा रहे हैं. लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक player पकड़ा गया, there's absolutely no way they can fight back. The only hope that Myokin has is that somehow he will be able to stay on top of these cliffs and rat his way to safety. NXT on the other hand, they have captured one of the choke entrances. बीचों बीच ये 4 cliffs के ये Nirvana end होना चाहिए mostly, but 8-bit have a little bit more cover than Myth for now. Myth के पास एक साइड से अच्छा सा cover है. They will be safe from 8-bit at the very least. लेकिन अगर उनके आजू बाजू कोई दूसरी टीम आए, they will be in trouble once more. जी हाँ, तकलीफ जरूर होगी उनको, लेकिन 8-bit के पास कवर बहुत ज्यादा है फिलहाल के लिए. मुझे लगता है Myth के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, बिकॉज़ 8-bit को यहाँ पे एलिमिनेट करना नामुमकिन सी बात है. और Myth पूरे के पूरे ओपन एरिया में स्मोक जरूर है, लेकिन स्मोक सॉलिड कवर नहीं है. लेकिन पीछे से निर्वाणा आ रहा है, अब 8-bit को बाहर निकलना पड़ेगा. रोटेशन देखिए, कवर देंगे अभी वो लेफ्ट साइड से. Exactly. Juicy अपने टीम से हल्का सा स्प्लिट हो चुके हैं, playing near that pillar, and उनके पास एक दूसरा एंगल रहेगा onto all the players of Myth. Myth actually निर्वाणा अवॉइड करके already एक early rotation करने की कोशिश कर रहे हैं, and although they've lost a lot of HP in the process, I hope they don't lose any men. लेकिन Mighty will make sure that Pranjal goes down. Those Devastators and Tridents are absolutely disaster on long range. Myth is having so much trouble क्योंकि अगर वो एक साइड से 8-bit से बचने की कोशिश करेंगे तो दूसरे साइड NXT उन्हें मार गिराएगी. They are sandwiched and they needed to get out of there. They absolutely need to get out of there. लेकिन क्या निकल पाएंगे? मुझे लगता है बहुत मुश्किल होने वाला है उनके लिए वहां से निकलना. Wait, is Watsal still outside? Somehow, yeah. I'm not sure, but you know what? Anyway, फिलहाल NXT की पोजीशन देखिए, वो मुझे लगता है निकल पाएंगे यहाँ से. उनके पास थोड़ा बहुत कवर जरूर है, लेकिन 8-bit पीछे से मार कर सकते हैं. 8-bit के प्लेयर्स उनके ऊपर क्या मारेंगे? गोली चलाएंगे? जी नहीं चलाई उन्होंने. Okay. No, he tried to escape, लेकिन Weird Baba found him. Well, that is one of the last members of Global eSports. Global eSports in Watsal. I don't think so. He's out there. I don't know honestly what's going on with him. But for now, let's focus on 8-bit trying to shred Myth and NXT trying to make their lives harder. Okay, this is a very risky rotation. Thunder 8-bit Juicy की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं on that tufan, लेकिन Juicy के दूर से कवर दिया जा रहा है and Juicy will be knocked, लेकिन at least takes one player down before he bites the dust. तो इससे 8-bit might lose one player, but they will be able to get the revenge onto NXT. Devastator से devastation फैलाते हुए इतना बर्बाद कर दिया सामने वाली टीम को. अभी ट्राइडेंट निकाल ली.
मैंने कहा है कि अगर आपको पता है सामने वाला प्लेयर कौन से डायरेक्शन से आने वाला और ये दोनों वेपन्स आपके पास मौजूद हो, तो मुझे लगता है सामने वाली कोई भी टीम हो, अगर आप पाएंगे 8-bit लूजिंग अ प्लेयर, बट अभी भी प्रिसिशन काफी अच्छी है। NXT को एलिमिनेट कर पाएंगे, जरूर NXT को रोटेट करने की जरूरत है। ओह माय गुडनेस, ओह ये देखिए हेडन को देंगे, हेडन को दफना देंगे वहीं पे डेवास्टेटर के साथ। एंड अब 8-bit के लिए बहुत मुश्किल है, ये सामने देखिए रास्ता नहीं है उनके पास, तो उनको डैमेज लेके ही जाना पड़ेगा बाहर मेरे ख्याल से। Yeah, how do these teams fight each other? Like we have reckoning का एक player Weird Baba, he's taking damage in Nirvana, somehow tanking that damage. Super 4 on the other side of this cliff, 8-bit on the other side. Like, can they fight each other? Is it possible? I actually have no idea. And I think now this will be a game जहाँ पे Cosmium की position determine करेगी कि कौन विजेता रहेगा. कहाँ घूम रहे हैं अभी? I think if he just dies to the Nirvana instead of giving away his point to Super 4, it will be better. And luckily he has enough health packs. उनको एक और डेड बॉडी का डब्बा मिल गया है जहाँ से hopefully he will be able to find a little bit more health. लेकिन Super 4 का रोटेशन देखिए, निर्वाणा डैमेज टैंक करते ही वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और उनका रोटेशन तो काम कर जाएगा, लेकिन 8-bit को पता पड़ चुका है वो कहाँ से आ रहे हैं and they will be destroyed. 8-bit मुझे लगता है उनको मालूम है, अभी भी बिल्कुल भी मालूम नहीं सामने वाले कहाँ से आ रहे थे। This could actually work out in his favor. ऑक्टेवियस पीछे जरूर देख रहे हैं, लेकिन क्या बियर्ड बाबा के पास enough टाइम है, क्या वक्त है उनके पास अंदर जाने के लिए? It could be. He could still live though. He could still live. Or is he not moving? He can't move. नहीं, वो अटके हुए पहाड़ी नीचे अटके हुए नहीं है। जी होने वाला है। जी हाँ। 8-bit के लिए काफी आसान सा मैच है ये। बियर्ड बाबा। Oh, maybe not. Maybe not. He could still live. He could still live. यहाँ पे बैठे रहते थे दो प्लेयर्स की डेड बॉडी पड़ी उनके सामने। बहुत ज्यादा लूट हो सकती है, पोटेंशियल लूट हो सकती है। यहाँ क्या हील बैटल, पहला हील बैटल में देखने मिलेगा यहाँ पे। एक और डब्बा, चार और डब्बा है, लेकिन क्या जिंदा रह पाएगा? Does he have the time? He does. He lives. एक और बार, एक और जिंदगी, 5 और सेकंड। बियर्ड बाबा कितनी कोशिश करेंगे, आप सामने वाली टीम अभी भी जोन के अंदर बरकरार, क्या वो जिंदा रह पाएंगे वहां पे? एक और मूवमेंट की जरूरत, एक और, मुझे नहीं लगता क्योंकि 8-bit के पास उतनी हेल्प होने वाली है। Exactly. I mean, unless 8-bit अपने सारे heals एक player को दे दे और वो एक player निर्वाणा का डैमेज टैंक करते जाए, तभी जाके 8-bit जीत सकते हैं। But imagine if Weird Baba now has a grenade and he throws that into the corner और सारे 8-bit players एक साथ मर जाएंगे. That would be the clutch of the tournament, bro. मैडमैन, उनको भी पता पड़ गया है कि यार ये इधर तो है नहीं, जोन के बाहर ही रहेगा किधर, और मैडमैन ने अभी कहा कि मैं इसे खुद जाके मारने की कोशिश करूंगा, लेकिन नो, बियर्ड बाबा मरते एक और प्लेयर की लाश अपने नाम कर जाएंगे। He will be able to get at least one more point before he goes down, but will he go down? He actually survived. He won't. You can't be serious, man. You cannot make stuff like this up. The first heal battle of the tournament, and it keeps us both on the edge of our seats. मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था इस गेम में हमें इतना ज्यादा एक्शन देखने मिलेगा। मामा क्या वाइब चेंज था। Match number 2, match number 3 starts off slow and then towards the end we have way too many teams alive. ये मैच एकदम ऑपोजिट, गेम के स्टार्ट में गॉडलाइक 10 किल निकालते हैं। गॉडलाइक वर्सेस रेकनिंग वर्सेस 8-bit top 3 titans fight. 8-bit somehow comes out on top and then they bully everyone else. मैं दर्शक को बता दूं, क्लिप्स में ऐसे बैठे, ऐसे मैं सुबह से गिर गया ऑलमोस्ट। मैं ऐसे पकड़ के बैठा हूं आखिरी फाइट में। I'm like, oh my god bro. Brilliant, absolutely brilliant. मुझे नहीं याद आखिरी बार मैंने ऐसी कब फाइट देखी थी, लेकिन जिस तरीके से अभी उन्होंने खेला है मुझे लगता है कि शानदार। And this has to be the best match so far of the tournament. Right, second last match था टूर्नामेंट का, अब 5वां मैच होने वाला है। And bro, like the level of excitement in each game just keeps on rising. और ऐसा नहीं कि हम लोग excited हो रहे हैं, the games themselves are so nuts, bro. I'll be honest, I've fallen in love with the game. Already, I'm 100% fallen in love with the game because I'm head over heels. Entertainment value की हम बात करते हैं, हमेशा बात करते हैं। See, as casters, as storytellers, we are used to these moments जो हमने कई बार देखी, काफी बार हम सोचते भी इसके बारे में, लेकिन इस गेम की बात कुछ और है। जिस तरीके से हील बैटल हुई थी, आई थिंक इट्स परफेक्टली बैलेंस्ड लास्ट जोन में उस तरीके से हील करना, बट उसके बारे में और चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेडीज एंड जेंटलमैन, डू नॉट गो एनीवेयर बिकॉज़ वी विल बी राइट बैक।